Good morning everyone. तो पिला माने समस्त को शुभ सकाळ समस्त टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ ताकि हमें आज सेशन हमर स्टार्ट करबा टीचिंग एप्टीट्यूड रो सेशन। गुड मॉर्निंग प्रणाम समस्त को पिला माने शुभ सकाळ समस्ते टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ आज हमें हमर सेशन स्टार्ट करबा। गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ विजयीन। समस्ते मैम मैथ क्लास बीएड पाई होउनी कौन पाई मैम? बीएड पाई मैथ क्लास निहाती भाबरे हबो, डोंट वरी अबाउट दैट। सबु जिनस होची मैथ क्लास हबो नि कहीं मैथ क्लास भी हबो। गुड मॉर्निंग अर्चना समस्ते टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ पिला माने फुल ऑफ जोश रे एंड लाइक शेयर कर दियो टिके सांग मानकू तो तम सांग माने भी पार्टिसिपेट करि परबे एंड समस्ते पार्टिसिपेट करके हमें देखिबा समस्त क्लास टी फ्रूटफुल हो। बेसिक क्लियर नथिले खाली शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कले चलिबो ना मैम, बेसिक तो क्लियर निहाती दरकार एंड ए जो क्लास होची पिला माने तम पाई मु सेटा कहि दिए सेटा नॉट ओनली मैम बीएड बुक केबे आसीबा आर्ट्स रो उमाशंकर शर्मा आर्ट्स रो बीएड बुक ऑलरेडी अछि। जदि तमे परचेज करिया को चाहू जो तमे ऐप रु मध्ये परचेज करि परिबो बीएड बुक अवेलेबल अछि। मैम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आनंदो निहाती भाबरे एंड एठी जो तम मानकर एमसीक्यू होउची नॉट ओनली कि आमे बेसिक रु जाउने आमे जो भी एमसीक्यू पढुचे पिला माने तो प्रत्येकटी एमसीक्यू रा आमे थ्योरेटिकल एनालिसिस करूचे एंड गोटे क्वेश्चन रा एनालिसिस रु कोन हबो ए मा मोर जस्ट ए मिनिट तो से कौन हबो ना गोटे क्वेश्चन एनालिसिस रु हमको हेल्पफुल एया हबो कि हमें आउ पांचटा क्वेश्चन आउ पांचटा थ्योरी आउ पांचटा जिंस जानि परिबा। तो डोंट वरी अबाउट कि हमें खाली क्वेश्चन डिस्कशन करूचे एटा ही तम पई हेल्पफुल हबो। यस आज एमसीक्यू हबो सबु थरक तो एमसीक्यू ही होउची एंड मझरे मझरे हमें थ्योरी मध्ये आनिबा डोंट वरी एंड ए एमसीक्यू थ्रो रे हमें थ्योरी ही प्रैक्टिस करबा केमिति कोन क्वेश्चंस आसीबो कोन आसीबो। ठीक अच्छे अश्विनी मैम 10 रे क्लास करंतु प्लीज 10 पूर्व मु छाड़ी देबी निहाती भाबरे। यस चैप्टर वाइज ही आनिबा मैम ए क्लास एसएसबी देख तमे देखा चाहिए सब किसी देखिपर सब जिनसर सबुठी इंटरलिंक्ड अच्छी मु सेमिति 100% गारंटी दे पारिबिनी कि जिनसटा एग्जाम रे आसीबो बट वी प्रिपेयर ओके। तो ठीक अच्छे समस्ते धीरे धीरे जॉइन हुंतु आमे आ डिले न करिकी हमर क्लास स्टार्ट कर दबा। आज फर्स्ट क्वेश्चन नो ता लेट्स ग्रो। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज तो जने गुड टीचर उपरे सीयूईटी बीएड पई पेडागोजी कौन कौन पढ़िया हुए निहाती भाबरे शुभम
पेडागोजी एगुड़ाक पढ़ तुमको भी हेल्पफुल हम शुभम सीयूटी बीएड पाई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज बी बी समस्ते कहले समस्ते आंसर दियो पिला माने समस्ते आंसर दियो तापरे ही आगु को जीवा। लव एंड एम्पैथी ऑफ लर्नर्स वेरी गुड। The right answer कौन ना ऑप्शन बी दैट इज लव एंड एम्पैथी फॉर लर्नर्स। तापरे कौन कमांड ओवर सिलेबस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो केबे भी हबो नाही गोटे फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन से फॉलो करिवे रिजिड डिसिप्लिन हबो नाही देन अथॉरिटी इन द क्लासरूम ओनली रिजिडिटी क्लासरूम बा अथॉरिटी टीचर मेंटेन कले ताहले सेटा कौन हे जो पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हे जो आमे तांको गुड टीचर कहिबानी केवल कहि परिबा एटा कौन हे परिबा गोटे ऑथोरिटेरियन क्लासरूम हे पारिबो गोटे एक्टिव क्लासरूम सिचुएशन हे पारिबनी। कमांड ओवर सिलेबस जदि मु कहिबी कि कमांड माने कौन मोर केवल सिलेबस रो नॉलेज अछि सिलेबस रे कौन कौन अछि मु सेही सब जिंस जानी छी। कमांड ओवर सिलेबस माने केवल मु सिलेबस रे दक्ष अछि मु सिलेबस रे दक्ष एटी पचार जे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर जने भल शिक्षक आमे केमिति हे पारिबा आम भितरे को गुण रहिबा दरकार। मैम टीचिंग एप्टीट्यूड रो सब क्वेश्चन तो ठीक बोले सेमती लगे पिला माने तो सी पचारि कि आमे जने भल शिक्षक केमिति बा गोटे भल शिक्षकर क्वालिटी बा गुण कौन हवा दरकार। अथॉरिटी इन द क्लासरूम आमे केवल क्लासरूम अथॉरिटी गुड टीचर कहि परिबानी सेते बेले गुड टीचर कहि परिबा जी गोटे फैसिलिटेटर जी गोटे गाइड हिसाब रे काम करबे केवल नुह कि अथॉरिटी रोल प्ले करबे ए मु एटा कहूची माने एटा करिवु मु एटा कहली माने एटा ठीक केबे भी जो टीचर एमिति इंपोज करंती छुआ मानक ऊपर सी केबे भी गुड टीचर नुह। देन आसला कमांड ओवर सिलेबस एबे मु कहूची पिला माने मु टीचिंग एप्टीट्यूड कोन जानि छी काहे ना मु सेही फील्ड रो मु मास्टर्स करि छी सेतिरे मु भी बीएड करि छी मु एवरीथिंग जानि छी मु जेते सिलेबस जानिले भी जदी एबे मु तम सामने रे ठिया हे कि कोन करबी ना किछि गोटे जिंस एक्सप्लेन करि परिबी नाही। मैम सबुदिन क्लास हुए कि टाइम रे यस नॉट रे सबुदिन क्लास होची बट अलग अलग सब्जेक्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड कौन होची ना तमरो शनिवार को शनिवार टीचिंग एप्टीट्यूड ना एजुकेशनल अवेयरनेस रो क्लास होची। तो पिले देखो मु एबे सपोज कहबी कि टीचिंग एप्टीट्यूड रो ए टू जेड जाय सिलेबस मते जणा अछि किंतु तमे जदी कहबो सिलेबस जणा अछि तो ताहाले सेटा मते कहि परिबो नाही कि एम्ति कि मैडम आपन को सिलेबस जणा अछि माने आपन जणे भल टीचर मु सेते बेले भल टीचर हे पारिबी जेते बेले से सिलेबस टाकू मु तुमको भल भाबरे बुझेई कि तुम माइंड तुम हार्ट जाए से जिंसटा पहुंची परिबा भली पढेई पारिबी सेते बेले मु गोटे गुड टीचर रो टैग पाइबी ना कि मु केवल सिलेबस जानि छी मु सिलेबस को घोसी की पळे आछि कोन ना मते सब सिलेबस जणा अछि ताहाले मु गुड टीचर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्लास रे केवल कहबे चुप रुह ए पार्टी करनी ए एटा कर ताहाले मु गुड टीचर नुह। तो मु सेते बेले गोटे गुड टीचर रो क्वालिटी कोन ना जेते बेले मो पाखरे लव एंड एम्पैथी फॉर लर्नर्स मु छुआ मानन को भल पाउथिबी मु क्लासरूम रे छुआ मानन को स्नेह आदर करूथिबी एवं छुआ मानकर सिचुएशन बुझी पारुथिबी एंड सेमानकर इंटरेस्ट सेमानकर क्यूरियोसिटी सेमानकर मोटिवेशन लेवल सेमानकर इंटेलिजेंट लेवल केते अछि सेही जिंसटा जानि कि मु सेमान को टीचिंग प्रोवाइड करिबी। ओके ठीक अछि मैम आपन को डाउट पचारिया को हेले केमिति कांटेक्ट करिवो मैम गोटे शेड्यूल शेयर करंतु को डे रे की क्लास अछि ठीक अछि। ओएसटीटी रो तो बहुत सारा क्लासेस हेई छी ओएसटीटी क्लासेस तमे ओएसटीटी प्लेलिस्ट मारी की देखो टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग टा गोटे प्रोसेस हिसाब रे बेस्ट डिस्क्राइब केमिति हुए ना ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ना कंडीशनिंग लर्नर्स ना फैसिलिटेटिंग लर्निंग ना कंट्रोलिंग बिहेवियर। अश्विनी मोर टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट हेइनी मोर टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट हेई गले मु निहाती भाबरे तुम मानन को देई देबी
मोर चैनल नाही तो ऑफिशियल चैनल क्रिएट हेनी हेले मु देई देबी सेइथरे तुमे मो सहित कांटेक्ट करि परिबो। 2 नंबर कौन है परिबो टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ पेड बैच रे थ्योरी क्लास भी हुए कि ना खाली ना ना पेड बैच रे थ्योरी विथ एमसीक्यू हुए पेड बैच रे बोथ थ्योरी एंड एमसीक्यू हुए बट एठी तुमरो केवल एमसीक्यू होची। यस अभिषेक मु बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल ओपन कले निहाती भाव में कहबी अश्विनी पीडीएफ टा मु आडा ओडिया रे छाड़ी देबी आज क्लास सरला पर डोंट वरी अबाउट दैट। तो फैसिलिटेटिंग लर्निंग यस राइट आंसर हो जे टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज इट इज ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टीचिंग माने कौन आमे केवल इन्फॉर्मेशन टा छुआ माने को ट्रांसफर करबा नो देन कंडीशनिंग लर्नर माने कौन छुआ मान को केवल कंडीशन करके घोषा माने रोट मेथड रे पढ़ाइबा होची कौन ना ओनली कौन टीचिंग तापर तो होची कंट्रोलिंग बिहेवियर छुआ कोठी केमिति बिहेव करबो ए जगह पॉजिटिव ए जगह नेगेटिव को जगह अटेंटिव रहइबो केवल सेही जिंस गुडा को तार बिहेवियर को कंट्रोल करबा कौन होची ना कौन ना टीचिंग तो सही जिनस गुड़ा कौन नुह सी एंड डी भितर कन्फ्यूजिंग लगुच 2 नंबर क्वेश्चन ने ओके तो राइट आंसर होची फैसिलिटेटिंग लर्निंग डी हबो नहीं काहे ना एटा कंट्रोलिंग बिहेवियर तमे केबे भी छुआ मान को बिहेवियर को कंट्रोल करबा को आज ए टीचर टीचिंग प्रोसेस रे चेष्टा करबा गोटे पॉजिटिव जिंस नुहे पिला माने पॉजिटिव सेठी जोटी तमे तांका बिहेवियर को एनहांस करबा पई वृद्धि करबा पई तांकर किछि न्यू पॉजिटिव बिहेवियर इनकलकेट करबा पई तांको फैसिलिटेट करूछ तो राइट आंसर होची तमरा ही ऑप्शन सी दैट इज फैसिलिटेट लर्निंग टीचिंग टा सेते बेले बेस्ट प्रोसेस हेई परिबो जेते बेले एज ए टीचर एज ए एजुकेटर आमे स्टूडेंट मानू कोन करबा फैसिलिटेट करबा तो से माने लर्निंग प्रोसेस करबा पई मैम बैच वैलिडिटी 1 ईयर पई तमरा रहूची 1 ईयर तमरा गोटे वर्ष पई ही तमरा बैच वैलिडिटी रहूची ओके। नेक्स्ट which of the following reflects a learner centered classroom कोटा गोटे learner centered classroom को reflect करूची teacher talks most of the time student actively participate rigid class lesson plan emphasis on rote learning कोटा है परवा गोटे काम करुचे मुझे सुभाषिष आ विकास को दे दौचे मुढ़ी मिक्सचर खाई बसिकी गप मार सी अमानिया बाघ डाकिकी हा हा होचे सी सुभाषिष डाकिकी हा 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 एटा मो क्लास नुह तो यात्रा चली कौन करी आ यस राइट आंसर होची ऑप्शन बी कौन ना स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट तो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम माने कौन जोठी लर्नर्स माने कौन थांती लर्नर्स माने एक्टिव थांती लर्नर्स माने केमिति लर्निंग करि थांती ना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज माध्यम रे कौन ना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज माध्यम रे लर्न करि थांती देन कौन से माने प्रैक्टिकल सिचुएशन ने लर्न करि थांती एटे टीचर रो रोल कौन गोटे लर्नर सेंटर्ड रे ना टीचर रो रोल होची एज ए फैसिलिटेटर गाइड तो सी एज ए फैसिलिटेटर और गाइड हिसाब रे काम करंती एंड मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द लर्नर्स ओके तो यार राइट आंसर होची स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट गोटे लर्नर सेंटर रे स्टूडेंट माने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रे तांकर लर्निंग तांकर नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करबा को चेष्टा करंती एवं निजे नॉलेज टा डेवलप करंती तो एटे टीचर फैसिलिटेटर बाय गाइड हिसाब रे काम करंती छुआ को मोटिवेट करंती एवं सबु जिंस रे कामटी करिया पई फैसिलिटेट करंती ओके एंड टीचर टॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम जदी हबो एटा टीचर सेंटर्ड हबो ओके तो जोठी हमें कहबा टीचर टॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेटा टीचर सेंटर्ड रिजिड लेसन प्लान सेटा टीचर सेंटर्ड एम्फासिस ऑन रोट लर्निंग सेटा माने टीचर सेंटर्ड रे आसीबो टीचर केवल कोन करबे कि मु जहाँ लेसन प्लान करुची से ही पढ़ाब छुआ का इंटरेस्ट छुआ का नीड्स छुआ का होप विषय देखा जीव नहीं रिजिड लेसन प्लान रहा एम्फासिस ऑन रोट लर्निंग सपोज एज ए टीचर मु कहूची किछि गोटे जिंस तमे बुझ बा न बुझ तुमको घोषिकी मन रखिया पई बाउंड तमे घोषिकी ही मन रखिबो देन टीचर टॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर सेंटर लर्निंग रे कोन टीचर ही केवल कहू थांती छुआ मानन को स्कोप दिया जाए नाही ओके यस दिनु चलिबो
Next jiba, the role of a teacher in modern education system is mainly that of a कौन डिटेक्टर, इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, एग्जामिनर. कौन हम पिले द रोल ऑफ ए टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन इज मेनली दैट ऑफ ए यस सुभास्मिता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्नर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड. ओके, ए क्वेश्चन आंसर दे सार तापर निहाती भाव में कहीदेवी. C. Obviously, modern education emphasis on learner-centered education. Learner-centered education. So that in a learner-centered education, the role of a teacher is a facilitator. Okay, एबे तम क्वेश्चन आसिला कि learner-centered एवं learning-centered भितरे थियोरी क्लास पिला माने देखो तमे जदि थियोरी क्लास यूट्यूब सेशन ने चाहिबो, थियोरी क्लास के यूट्यूब सेशन ने देबेनी. एंड फ्रांकली कहवा को गले तुमको ये क्वेश्चंस मिलवा एंड से क्वेश्चंस मिलूची कहीं ना चैनल प्रोवाइड करूची. ओके, तो थियोरी तो ये कौन से चैनल तुम खोज थियोरी मिले तुमको गोटे लॉन्ग सेशन मिल एमती मिलनी ये तुमको क्वेश्चन आंसर मिल. जदि थियोरी ये पढ़ाब ताले गोटे चैनल पेड बैच कहीं कनसीडर करुची. मु फ्रांकली कहूँ क्या खराब लागू भल लागू बट एटा ही सत कथा. थियोरी जदि ये पढ़ाब ताले पेड बैच कहीं अच्छी ताले जो छुआ मैंने परचेज करुँचे से भितर आउ डिफरेन्स कौन रहा जोटा ट्रू फैक्ट तुम मान क्वेश्चन आंसर अच्छी. थियोरी भी हम कि थियोरी सब बेले होनी जोटा चलुची एमसीक्यू सेशन यूट्यूब रे ही चलुची जोटा सबुठी भी चलुची एठी भी चलुची तुम जोठी भी खोज से जिनस. तो बेसिकली लर्नर सेंटर एवं लर्निंग सेंटर कौन तफात ये देखा कि एटा हला टीचर सेंटर्ड, एटा हला लर्नर सेंटर्ड, एटा हला लर्निंग सेंटर्ड. तो तीनटा को भितरे बेसिक डिफरेंस कौन ना बेसिक डिफरेंस होचे टीचर सेंटर्ड रे टीचर हेले सेंटर. ओके, टीचर हेले सेंटर पार्ट सेंट्रल पार्ट. देन लर्नर सेंटर रे लर्नर ही होचे सेंट्रल पार्ट. ए दुईटा जगह डिफरेंस है टीचर सेंटर रे केवल टीचर जहाँ कहबे हबो टीचर डोमिनेंस. ओके, लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड रे कोन लर्नर्स डोमिनेंस. बट व्हेयर वी कम टू द लर्निंग सेंटर्ड मेथड जोठे बहुत को इंपोर्टेंस दिया जाए कि टीचर एवं लर्नर कर बहुत इंपोर्टेंस वेटेज रहिबो. टीचर आज ए फैसिलिटेटर काम करिवे, टीचिंग प्रोसेस रो केमिति एनहांसमेंट हेई परिबो से ऊपर गोटे लर्निंग फ्रेंडली लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हेई परिबो एंड गोटे कंडुसिव एनवायरनमेंट रे केमिति टीचिंग ता प्रोवाइड हेई परिबो सेटा लर्निंग सेंटर रे फोकस करा जाए जोठी वो टीचर एवं स्टूडेंट्स कर वेटेज रही थाए. ओके, तू मरुनु मैम ऋतुपर्णा किए गोटे कहले तू मरुनु मैम किछि नाई मते मरिबा को कहले भी भगवान को हेई गला. भल कथा मु मरी गले तुम कौन मो घरे भोजी खाइबा को डाकिबे कि गोटे काम करता मो घर कांटेक्ट नंबर नहीं कि जाइथा कहबू सुनीता मैम मरी गले मते भोजी खाइबा को डाकिबा. पूरी तरकारी खीरी जहाँ करेंगे तो स्पेशली डाकिबे खाइबा में. मो मास जो भौणी हबू ना मो शुभा मन आसुची मु मरी जाए बोली. कुआडू कुआडू आसुच जंतु मु खाली भाबुची. मु का कथा शुणुनी ना ना मु का कथा शुणुनी. तमे गोटे काम कर मो घर कांटेक्ट नंबर टा नहीं जाओ. मु तो ये क्या मिसबिहेव करने आसनी बट तमे बहुत भल मिसबिहेव करुच. तू मरुनु मैम. अरे भाई तुमको जार क्लास खराब लगुच तमें कहीं आसिक देख कहीं डिस्टर्बांस करने को आसब. एठी आसुसंदी यात्रा करने ना से कहतु ना टाइम पड़ी कहतु. नेक्स्ट कि इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स मोस्ट ऑन टीचर्स क्वालिफिकेशन, टीचिंग एड्स, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्लास साइज. कौन इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स मोस्ट ऑन
गोटे इफेक्टिव टीचिंग मेथड आमर केतेबेले हेई परिबो सेटा टीचर को क्वालिफिकेशन ने ना कौन हेई परिबो ना टीचिंग एड्स रे ना टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप रे ना क्लास साइज रे ऑप्शन सी वेरी गुड यस ऑप्शन सी होची टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप तो जेते बेले मु कहबी कि गोटे कोरियल रिलेशनशिप टीचर स्टूडेंट को भितर रहिबो गोटे पॉजिटिव रिलेशनशिप रहुची सेते बेले ही टीचिंग ता इफेक्टिव हेई परबो सपोज मोर क्वालिफिकेशन बहुत हाई अछि दैट डज नॉट मैटर कि मु केते हाईली क्वालिफाइड सपोज मु आसुची हाईली क्वालिफाइड है कि तुमको केवल अथॉरिटेरियन रोल प्ले करूची तो सेठी टीचर्स क्वालिफिकेशन ना निहाती भाबरे कहूची बीएससी रो बुझौची अपेक्षा कर कि टीचर्स क्वालिफिकेशन मु जेते हाईली क्वालिफाइड है डज नॉट मैटर कि तमे कौन हम ना तमरो इफेक्टिव टीचिंग हे जिवो मु धर पढ़ाई पारुनी मो क्वालिफिकेशन कौन हम मु डिग्री हासिल कर देली मु पेन पेपर रे लिखि देली मु हाईली क्वालिफाइड हे गली सेटा टीचिंग इफेक्टिव हे परिबो नाही देन असला टीचिंग एड्स बा जोटा हमें कहूचे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन ना टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तो ये टीएलएम रे कौन आसुची लाइक तमरो जेमती ब्लैक बोर्ड भी आसीबो तमरो बुक्स भी आसीबो तमरो वीडियो एड्स आसीबो ऑडियो एड्स आसीबो पिक्चर्स आसीबो तो जो जिनस यूज करिकी आमे क्लासरूम रे छुआ मानंगो पढ़ौचे तो से जिनस गुडा होची कोन टीचिंग लर्निंग एड्स देखो सपोज मु कहूची टीचिंग एड्स मु जते बेले आज टीचर पढ़ौची निहाती बारे मो बुक्स नौची बुक्स भी गोटे टीचिंग एड्स हैला मु कौन कली गोटे मैप्स भी देली ना इफेक्टिव टीचिंग जते बेले हेई परिबो आमे एठी कहूचे टीचिंग एड्स भी दरकार ना मैम यस टीचिंग एड्स भी दरकार तो टीचिंग एड्स कोन खाली मु टीचिंग एड्स नै गली थोई देली एंड तुम मानू भलसे बुझेलिनी तुम मानू फैसिलिटेट कलेनी मु केवल नहीं कि गोटे पिक्चर देखई देले तुम मानू सेतिकी भलसे न बुझेले तुम मानू सेतिकी एनहांस न करेले तुम माने कोन हेई परिबो तुम माने पढ़ी परिबो कि तो जेते बेले टीचर स्टूडेंट भितर गोटे कोरियल रिलेशनशिप रहिबो स्टूडेंट गोटे सही एनवायरनमेंट फ्री फील करूथबो एवं कोन हबो ना टीचर स्टूडेंट माने भितर सेतिकी भल रिलेशनशिप आसिले से टीचर को गोटे क्वेश्चन पचारि पारुथबो एवं टीचर ताको भलसे बुझेई पारुथबो बाय द यूजिंग ऑफ टीचिंग एड्स सेते बेले सेटा इफेक्टिव हेई परिबो ओके मैम सिलेबस आमको सेंड करंतु ओके ठीक अछि मु तुमको टेलीग्राम चैनल ले सिलेबस निहाती भाबरे सेंड करि देबी मु आज ही सिलेबस तुमको सेंड करूची सिलेबस एंड ए मटेरियल ओके नेक्स्ट बा 6 नंबर को कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज क्लोजली रिलेटेड टू तो टीचिंग एप्टीट्यूड कहा सहित क्लोजली रिलेटेड इंटेलिजेंस ओनली पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड एकेडमिक अचीवमेंट एज ऑफ ए टीचर कौन हबो टीचिंग एप्टीट्यूड कहा सहित क्लोजली रिलेटेड ओके बीबीसी ओके आडा 247 ओडिया पिला माने आडा 247 ओडिया तो ये होची आडा चैनल लो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप एइथिरे मु आज सरले जो माने सिलेबस जानि छ तो भलो कथा जो माने जानि न मु तुमरो बोथ सेंट्रल बीएड आ स्टेट बीएड रो सिलेबस सेंड कर देबी एंड तुमरो गण यार पीडीएफ मटेरियल मध्ये तुम मानको को सेंड कर देबी यस राइट आंसर होची ऑप्शन बी कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज क्लोजली रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड ओके नेक्स्ट बा कि ए गुड टीचर शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द जने गुड टीचर फर्स्ट कौन अंडरस्टैंड करबा दरकार सिलेबस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लर्नर्स नीड्स एंड एबिलिटीज एग्जामिनेशन पैटर्न आज ए गुड टीचर तमे फर्स्ट कौन देखिबो बा कौन जानिबा दरकार कौन बुझिबा दरकार टीचिंग प्रोवाइड करबा पूर्वरु यस ठीक अच्छे एस कुमार सेंड करदेवी डोंट वरी अबाउट दैट
यस राइट आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज लर्नर्स नीड्स एंड एबिलिटीज। जेते बेले तमे मने रखि था कि आज ए टीचर तमे आगो को बीएड करबो, बीएड कर साला परे सीटीईटी ओटीईटी ओएसटीटी सब क्वालिफाई करबो, जेते बेले तमे गोटे टीचिंग प्रोफेशन ने जाउछो अपॉइंटमेंट होउछो तो तुमको फास्ट फोकस करिवार अछि। तमे टीचर हे गला डज नॉट मीन बुक देखि कि ही पढेइबो। ओके तमे कौन करिवो फास्ट जेते बेले क्लास को एंट्री करजो देखिवो को माइंडसेट रो पिला अछंदी, सेमानक मेंटल एबिलिटी बा कैपेबिलिटी केते एंड सेमानकर तमे जो सब्जेक्ट टीचर साइंस हो आर्ट्स हो जहाँ भी सब्जेक्ट टीचर हो ओडिया इंग्लिश हिंदी जो भी सब्जेक्ट कि सही सब्जेक्ट रे पिलाटर मेंटल कैपेबिलिटी केते से कौन चाहूची को भली पढेइले मो छुआ माने पढ़ी पारिबे। तो फास्ट तमे तांकर नीड्स एंड एबिलिटीज देखि कि तांको पढेइबो, एटा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए टीचर। ओके ओके ठीक अच्छी। लोपामुद्रा मैम आपण देह भल ना कि मेडिसिन खातु ना पे मैंने ज्वर हो जाए टाइफॉइड अच्छी बट स्टिल मुझे अच्छी एंड मत एत खराब लगे माने सॉरी ये तुम मन शेयर करवा कथा नुह बट ट्रूली कि मत टाइफॉइड है कि भी मत थंडा भी है बट मुझे तुमको ये पढ़ेवा को किंतु आज ए टीचर मुझे ठिया है पढ़ेवा को माने मु इग्नोर करूली बट बार बार मैम तू मरुनु कहवा पर मत खराब फील है कि एमती कंडीशन में मु तुम मान आगे ठिया है तुम क्लास नापाई मु एबुल नुह मु ठिया हाँपाई मु कथा ठीक से कही पारुनी स्टिल मु यूट्यूब रे पढ़ाऊँगी आसिक ठिया है तुम जी मो द्वारा होची मे भी मु पूरा परफेक्ट पढ़ाई पारुनी सेटा मु जानी सेटा तुम मैंने जज कर बट तुम मैंने मत एमती का रिप्लाई दौच कि तू मरी जा मत केमती लगे मो मरवा कंडीशन में ठिया है कि तुम मानक आसिक पढ़ाऊँगी बट छाड़ गोटे टीचर तुम मान पत्थर माड़ भी खाई पार तुमठू फूल माड़ भी खाई पार तो तुम इच्छा तुम पत्थर माड़ कर कि फूल माड़ कर बट जदि तुम पर्सनाली मो सहित किसी शत्रुता अच्छी मत पर्सनाली शोध बट एमती यूट्यूब रे कहवा द्वारा पिलांकर माइंड हैम्पर होची पिला मानकर डिस्टर्बेंस होची तो सेथिलागी ही मु रागिली न नहीं मत मरी जा कहले तो मुझे मरी जीविनी ना तो ठीक अच्छे लर्नर्स नीड्स एंड एबिलिटीज ओके लेट इट 8 नंबर को आस तो डेमोक्रेटिक टीचर यूजुअली व्हाट जड़े डेमोक्रेटिक टीचर जी से कौन करी थांती तो टॉक्स ऑल डिसीजन एलोन तो गिव्स नो फ्रीडम टू स्टूडेंट्स ना एनकरेजेस डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन ना मेंटेन्स कंप्लीट अथॉरिटी। ठीक अच्छे आम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करा आसीसी माने ही पढ़ाई की जीवी देह खराब भल तो रहिबो इग्नोर दैट तुम माने क्वेश्चन आंसर करो। यस डेमोक्रेटिक क्लासरूम पिला माने कहिले डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक क्लासरूम कौन डेमोक्रेटिक क्लासरूम कौन यस आंसर सी इज द करेक्ट आंसर एनकरेज डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक एवं ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वर्सेस कौन ना ऑटोक्रेटिक तो डेमोक्रेटिक रे कौन समस्तंकर ऑल पार्टिसिपेशन तो सबू छुआंकर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करा जाए ऑटोक्रेटिक रे कौन ना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन माने तम स्कूल रो हेड जी सी जहाँ कहे से जिनस ही हम ओके किए कहले मिस राजन बी और सी रे कंफ्यूज बुझाऊँ जस्ट टिके वेट कर बी एंड सी रे तुम डाउट क्लियर हम तो सी कौन दे ऑल पार्टिसिपेशन को गुरुत्व दे एंड जो आम डेमोक्रेटिक क्लासरूम कहूचे से छुआ को कौन दि जाए फ्रीडम दि जाए कि तुम्हें फ्रीली क्वेश्चन कर तुम्हें तुम वॉइस रेज कर तुमको जो जिनसा भल लगुनि तुम्हें से जिनसा कहीपर तुम्हें सबू किसी गोटे फ्री एनवायरनमेंट रे तुम्हें लर्निंग कर बट ऑटोक्रेटिक जो वॉइस टाक छुआंकर दबा दि जाए तुम्हें से जिनस कर मैम व्हाट्सएप रे गोटे ग्रुप करंतु पेड बैच रो ऑलरेडी व्हाट्सएप रे पिला माने ग्रुप अच्छी गोटे किंतु मु एठी यूट्यूब रे जेहेतु तुमको पर्सनल नंबर दे पारबिनी देखुछ तो केमिति मिस कंट्रोवर्सी होउची तो मु तो यूट्यूब रे पर्सनल नंबर शेयर करी पारबिनी बहुत जल्दी मो टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट हेले मु तुम मानकु देई देबी ओके तो से कौन है ना तेणु डेमोक्रेटिक टीचर यूजुअली कौन ना एनकरेज करंती पिला मानकु डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन ना जेते रो जेते तुमे माने पार्टिसिपेट करि परिबो एवं तुमे गोटे टॉपिक को डिस्कस करिके पढ़ी परिबो एमसी कहले
बी आउ सी भितर कंफ्यूजन गिव्स नो फ्रीडम टू स्टूडेंट्स तो ए जो नो फ्रीडम रहिला एटा तुमरा ई ऑटोक्रेटिक रे आमे ऑटोक्रेटिक क्लासरूम जोटी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बा टीचर ही सोल अथॉरिटी टीचिंग प्रोसेस रा सेठी छुआ मानंगु किछ फ्रीडम दिया जाए नाही किंतु डेमोक्रेटिक कहले समस्त निजर वॉइस उपस्थापना करि परिबे समस्त क्वेश्चन पचेरि परिबे समस्त फ्रीली निजर इंटरेस्ट एवं नीड्स अनुसार पाठ पढ़ी परिबे सो डेमोक्रेटिक टीचर जे गोटे गणतांत्रिक बा आमे कहूचे डिसेंट्रलाइज व्यवस्था विकेंद्रीकरण शिक्षा व्यवस्था जो समस्ते मिसिकरी जो मूलरू हायर अथॉरिटी जाए समस्ते मिसिकरी गोटे शिक्षा व्यवस्था को आगू नेबे से टीचर का रोल है से एनकरेज करे पिलामानकर डिस्कशन एवं फुल पार्टिसिपेशन ओके ठीक अच्छे बनीता यस डेली एई टाइम रे क्लास होउची एई टाइम रे बट डिफरेंट सब्जेक्ट रो नेक्स्ट व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स टीचिंग एप्टीट्यूड द मोस्ट को फैक्टर सैलरी ना टीचिंग इंटरेस्ट ना स्कूल बिल्डिंग ना क्लास स्ट्रेंथ को फैक्टर टा टीचिंग एप्टीट्यूड को अफेक्ट करूची yes democratic meaning also student centered learning swai जगन्नाथ वेरी गुड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टीचिंग इंटरेस्ट जदि मोर टीचिंग रे इंटरेस्ट नाही ताले मु आज ए टीचर कोन करबी आसी कि गप भलिया पढाई दे कि जिबी मोर इंटरेस्ट नथिले अफेक्ट करबो मु जते बेले तमको टीचिंग प्रोवाइड करूची अंबिका मु तो ग्रुप करी छी बाकी मु पेड बैच रे टीचिंग एप्टीट्यूड पढौनी मु एठी ही यूट्यूब रे पढौची पेड बैच रे सुशांत सर नौछंती ओके The 10 number, a teacher who respects individual differences shows autocratic attitude, na professional commitment, na indiscipline, na partiality. कौन हबो? A teacher who respects individual differences shows what? सबु बेले तमे टीचर हिसाब रे तमरा सोल रेस्पोंसिबिलिटी कि तमे कौन करबो यस राइट आंसर होची प्रोफेशनल कमिटमेंट आज ए प्रोफेशनल टीचर तुमे कौन करबो सबु छुआंकर इंडिविजुअल डिफरेंस आमे जानि छे नो सिंगल इंडिविजुअल्स आर अलाइक मे बी दे आर ट्विन्स से माने ट्विन्स हेले मध्य तांको भितरे किछ डिफरेंसेस अछि जोटा कि आमे सोशल एनवायरनमेंट रो जानि पारु छे ओके तो सोशल एनवायरनमेंट आम जिते जानी पारुछे कि या भीतर डिफरेंस अच्छी तो जिते आम टीचिंग प्रोफेशन में जाऊे आमर सोल रेस्पोंसिबिलिटी होची प्रोफेशनल कमिटमेंट हिसाब रे तो आमे तांको पढ़ेबा ओके नेक्स्ट The main objective of teaching is to impart information, develop personality of learners, maintain discipline, prepare students for exam only. Yes, Milam. कौन हम 11 नंबर मु एजुकेशनल अवेयरनेस पढ़ाए शुभम पेड बैच रे यस डेवलपमेंट ऑफ द डेवलप पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर्स इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा कि 12 नंबर व्हिच क्वालिटी हेल्प्स ए टीचर टू हैंडल क्लासरूम प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली इमोशनल स्टेबिलिटी ना फिजिकल स्ट्रेंथ ना स्ट्रिक्टनेस ना साइलेंस को क्वालिटी टा जने टीचर कर क्लासरूम प्रॉब्लम को हैंडल करिया पई हेल्पफुल हेइ थाए पिला माने 12 नंबर पेड बैच रे मु शुभम एजुकेशनल अवेयरनेस पढ़ाए एटा कोन होबा 12 नंबर व्हिच क्वालिटी हेल्प्स ए टीचर टू हैंडल क्लासरूम प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली तो वेरी गुड मिलम जामिन सही राइट आंसर होची इमोशनल स्टेबिलिटी जदी आज ए टीचर मो भितरे सेति की इमोशनल स्टेबिलिटी अछि ताले मो क्लासरूम को सॉल्व करि परिबी नेक्स्ट the best teaching method is one which is teacher friendly is examination oriented matches learner needs is time saving कोडा हबो 13 नंबर The best teaching method is one which yes option C matches learner need is the correct answer. Next, a teacher's positive attitude mainly influences students' fear, creativity,
अटेंडेंस ना हार्डवर्क सॉरी होमवर्क कंप्लीशन टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड कौन छुआंकर इन्फ्लुएंस करिथाय टीचर जदि पॉजिटिव एटीट्यूड देबे कौन सेटा इन्फ्लुएंस करिवो छुआंकर टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड रे कौन डेवलप होबो आंसर दियो 14 राइट आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज क्रिएटिविटी इज द राइट आंसर जितेबाला टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड देखेबे छुआ मानन को एनकरेज करेबे तो छुआ माने नुआ नुआ आइडिया नुआ नुआ कांसेप्ट डेवलप करेबे पई क्रिएटिव लर्नर होबा पई हेल्पफुल हबो नेक्स्ट द मोस्ट सुइटेबल क्लासरूम एनवायरनमेंट लर्निंग इज फियर बेस्ड कॉम्पिटिटिव ओनली सपोर्टिव एंड फ्रेंडली हाईली कंट्रोल्ड कोन हबो the most suitable classroom environment yes supportive and friendly but learning friendly but learner friendly environment very good further number C is the correct answer next teaching aptitude includes the ability to control students na communicate effectively complete syllabus early na maintain silence teaching aptitude include कौन करि थाए कोटा हेल्पफुल करि थाए teaching aptitude पिला माने 16 number yes very good communicate effectively गोटे क्लासरूम रे इफेक्टिवली हमें केमिति कम्युनिकेट करि परिबा सही विषय रे हमको हेल्पफुल हेइ थाए नेक्स्ट 17 देखो इफेक्टिव टीचर मेनली फोकसेस ऑन कोन ब्लेमिंग स्टूडेंट ना सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट कंप्लीटिंग सिलेबस मेंटेनिंग अथॉरिटी जाने रिफ्लेक्टिव टीचर कोन करि परिबे रिफ्लेक्टिव माने कोन निजर काम को निजे रीथिंकिंग करबा निजर इवैल्यूएट करबा मु आज कोन कली कोन न कली केते दूर मो पढ़ाटा ठीक हैला केते दूर मो पढ़ाटा भूल हैला तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट से रीथिंक करिवे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग माने निजर काम को रीथिंक करिवे एवं निजर काम को इवैल्यूएट करिवे और निजर इंप्रूवमेंट करिवे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे नेक्स्ट A good teacher encourages students to memorize facts, depends on teacher, think independently, avoid mistakes. कौन हम पिला माने? A good teacher encourages students to very good. Think independently is the right answer पिला माने. The option C is the right answer. Next. Which of the following shows professional ethics in teaching? Favoring intelligent students, na respecting all learners equally, na ignore weak students, na teaching for exam only. कहा को हमें कहि परिबा टीचर कर प्रोफेशनल एथिक्स अछि ए भितरु को पॉइंट रे yes right answer होची option B that is respecting all learners equally may be say weak student may be say highly intelligent may be say handicapped may be say socially weaker and socially high economically high student but जेमिति भी हो सब स्टूडेंट को इक्वली रेस्पेक्ट करिबा नेक्स्ट 20 नंबर कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज लीस्ट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल मोटिवेशन टीचिंग एप्टीट्यूड फिजिकल अपीयरेंस टीचिंग एप्टीट्यूड इज लिस्ट रिलेटेड टू कहा सहित लिस्ट रिलेटेड कौन होबो राइट आंसर यस राइट आंसर होची ऑप्शन डी दैट इज फिजिकल अपीयरेंस नेक्स्ट 21 number the success of teaching depends mainly on teaching method teacher's personality students interest all of the above कोडा हबो the success of teaching depends on teaching रा सक्सेस ता कहा ऊपर डिपेंड करि थाए पिला माने the right answer होची all of the above option D teaching method teacher's personality and students interest तो सब किछि डिपेंड करे गोटे सक्सेस ऑफ द टीचिंग बाय नेक्स्ट 22 which teacher behavior enhances learning sarcasm ना encouragement ना threatening ना comparison टीचर गरा को बिहेवियर ता टीचिंग प्रोसेस को एनहांस करे बा वृद्धि करिया पई सहाय्य करि थाए which मैम yes right answer होची encouragement option B is the correct answer next
23 teaching aptitude reflects a teacher's ability to manage time only, inspire and guide learners, control discipline, na finish syllabus. ए मासे गोटे अमानिया बाघ थिला ये के गोटे अमानिया कुकुर एमिति आईडी काहेकि दउछ सार्काजिम माने होची कोन साईश्री सार्काजिम माने होची थट्टा परिहास आज ए टीचर मु तुमको थट्टा परिहास करूची कि सेटा मोर प्रोफेशनल क्वालिटी कि सार्काजिम माने मु तुमको थट्टा परिहास क्लासरूम रे करिबा ओके द राइट आंसर होची इंस्पायर एंड गाइड लर्नर्स ओके नेक्स्ट a student is continuously disturbing the class what should the teacher do first जदि से continuously disturb करूची ताले गोटे टीचर को कौन करिवार अछि punish the student से स्टूडेंट को punish करबो ignore the behavior ता behavior को ignore करबो ना try to understand the reason and counsel the student ना send the student out of the class कौन करबो yes जेतेबेले से रेगुलरली डिस्टर्ब करूची सेते बेले हमर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी एज ए टीचर ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन एंड काउंसल द स्टूडेंट से स्टूडेंट को काउंसल करबा तार ए डिस्टर्बेंस रा रीजन कोन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 25 some students are unable to follow your lesson किछ स्टूडेंट माने अनेबल अछंदी तुमरा लेसन को फॉलो करबा पाई ओके देन व्हाट इज द बेस्ट स्टेप ताहले रिपीट द कांसेप्ट यूजिंग ए डिफरेंट मेथड ना कंप्लीट द सिलेबस क्विकली ना स्कोल्ड द स्टूडेंट्स ना इग्नोर स्लो लर्नर मान को इग्नोर करिवो ना छुआ मान को गाली करिवो ना सिलेबस ता क्विकली कंप्लीट करिवो ना कांसेप्ट को रिपीट करिवो डिफरेंट मेथड रे ऑप्शन ए रिपीट द कांसेप्ट यूजिंग ए डिफरेंट मेथड ओके नेक्स्ट होची ए स्टूडेंट गिव्स ए रॉन्ग आंसर कॉन्फिडेंटली सपोज तमे गोटे रॉन्ग आंसर कॉन्फिडेंटली दोच देन व्हाट शुड यू डू ताले तुमे सेठी कोन करबा दरकार रिडिक्यूल द स्टूडेंट ना इग्नोर द रेस्पॉन्स ना करेक्ट पोलाइटली एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन ना डी सॉरी पिला माने ask another students immediately yes option C is the correct answer correct politely and encourage participation very good next कौन देछि a student is very weak in studies but sincere how should a teacher respond ताहले गोटे टीचर केमिति रेस्पोंड करिवे ऑप्शन ए इग्नोर द स्टूडेंट ना गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट कंपेयर विथ ब्राइट स्टूडेंट्स ना फोकस ओनली ऑन हाई अचीवर्स जदि गोटे स्टूडेंट वीक अच्छी बट सिंसियर अच्छी ताले सेठी तमे कोन करबो ना गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट जोटा कुहा जाउछि कि रिमेडियल टीचिंग तमे फास्ट छुआटा को डायग्नोज करिया फल जानिलो कि छुआटार किछि पर्टिकुलर एरिया रे कोन अछि ना किछि कंफ्यूजन अछि ए पर्टिकुलर टॉपिक रो ए पर्टिकुलर एरिया रे से वीक अछि सो दैट तो सेही वीक पई पूणी क्लास केते बेले हबो नेक्स्ट सैटरडे रे टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास अछि सब सैटरडे रे एंड कौन ताको कौन करेंगे ना रिमेडियल टीचिंग जोटा कह जाए गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट सो दैट से कौन हम से सब्जेक्ट तार स्ट्रांग हो पार नेक्स्ट 28 यू फाइंड दैट स्टूडेंट्स आर बोर्ड ड्यूरिंग योर क्लास तमे फाइन करूछ कि स्टूडेंट माने तम क्लास रे बोर फील करूछनी व्हाट शुड यू डू ताहले एज ए टीचर तमे सेठी कौन करबा दरकार कंटिन्यू द लेक्चर सी बोर फील हेतांदु तमे तम लेक्चर कंटिन्यू करबा गिव मोर होमवर्क तांको आहुरी होमवर्क दबो ना चेंज द टीचिंग स्ट्रैटेजी तमे टीचिंग स्ट्रैटेजी चेंज करबो ना मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ना तमे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करबो निहाती भाबरे क्लास 10 रे सर जीवो 9:44 हेलानी यस ऑप्शन सी ना चेंज द टीचिंग स्ट्रैटेजी सपोज मु लेक्चर मेथड रे पढौछि एंड तम माने बोर अछ मु देखिले कि मो स्टूडेंट माने बोर अछन बार बार तांको बोर फील होछि तो सेठी मते इमीडिएटली मो टीचिंग स्ट्रैटेजी चेंज करिवार अछि सो दैट से माने इंटरेस्ट फील करिवे एवं क्लास रे से जो 45 मिनिट्स 30 मिनिट्स कांस्टेंटली बसिबे ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स आर अफ्रेड
to ask question से माने डरू छथि तुमको क्वेश्चन पचारे को देन व्हाट शुड द टीचर डू सेही जगह टीचर कोन करिया दरकार मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ना एनकरेजिंग क्वेश्चंस एंड ओपननेस ना इग्नोर द सिचुएशन ना रिड्यूस टीचिंग टाइम कोटा हबो ऑप्शन ए बी सी ना डी The right answer होची encourage questioning and openness. Next इबा 30. Student shows aggressive behavior. What should to be done? Students जदि क्लासरूम ने aggressive behavior देखौछन्दी ताहाले सेठी आज टीचर हमो कोन करियार अछि इमीडिएट पनिशमेंट डायरेक्ट तांको पनिशमेंट दबा ना पब्लिक ह्यूमिलेशन तांको ह्यूमिलेट करबा तांको इंसल्ट करबा पब्लिक ले ना सस्पेंशन तांको स्कूल लो बाहर कर दबा ना काम डिस्कशन एंड काउंसलिंग तांको सहित काम डिस्कशन करबा एवं काउंसलिंग करबा जानिबा रीजन बिहाइंड देयर एग्रेसिव बिहेवियर यस right answer is option D that is calm discussion with them and counseling फଳରେ ଆମେ ଜାଣି परिबा छुआडर रीजन कोन aggressive behavior पाई okay next while teaching you notice some students are not attentive जेतेबेले तमे टीचिंग प्रोवाइड करूछ सेतेबेले तमे देखुछ किछि स्टूडेंट्स अटेंटिव रहूना दे क्लास रे चगलामी करूछनी what should you do ताहाले तुमको कोन करिया छी स्कोल्ड देम तांको गाली करबो इग्नोर देम तांको इग्नोर करबो कंटिन्यू टीचिंग से जहा करछनी करंदु मो टीचिंग कंटिन्यू करबी नो यूज इंटरैक्टिव मेथड्स टू एंगेज देम ओके द राइट आंसर होची ऑप्शन सी कि इंटरैक्टिव मेथड यूज करबो सो दैट जो किछि पिला इग्नोर करूछंती बा अटेंटिव होनाते से माने ऑटोमेटिकली बाध्य होबे से क्लास रे अटेंटिव रहिबा पाई नेक्स्ट 32 a student from another language background struggles in class suppose आमे ओडिया रे पढौचे जने हिंदी रो छुआ अछि and से struggle करूची क्लास रे then the teacher should ignore the students से स्टूडेंट को इग्नोर करबो यूज इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव स्ट्रेटजीज ना scold the student ना ask the student to change school कोन करबो The option B is the correct answer. ना use inclusive and supportive strategies जो तिरे कि सीए multilingual education को use करिवो तारा regional language सबु language को use करके पढ़ेबो next teacher wants to be effective in the classroom से effective classroom रे हबा पाई चाहुछंदी the most important thing is authority ना strict discipline ना पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एम्पैथी ना कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जदि मु इफेक्टिव टीचर हिसाब रे निजको परिणत करबा को चाहूची ताहाले मो भितरे कोन क्वालिटीज आसीबा दरकार यस ऑप्शन सी मु पॉजिटिव एटीट्यूड एम्पैथी शो करबी स्टूडेंट कागरे सो दैट मो क्लास टा बेस्ट इफेक्टिव हेई पारिमो नेक्स्ट a teacher asks students to discuss in groups and present their views this reflects what teacher centered teaching democratic classroom approach autocratic discipline drill method the right answer होची option B that is democratic classroom approach ma'am एथरा yes exam रे तमे थरे नेक्स्ट क्लास रे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आनिवा सो दैट एग्जाम रे केमिति क्लियर हे जाय जणा पड़ जेबो ओके नेक्स्ट हमें प्रीवियस नेक्स्ट सैटरडे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं के आसीबा 35 a teacher praise even small progress made by a weak learner this example shows what motivation strategy favoritism strict discipline comparison पिला माने जे टाइम टेबल मागुछ तुमे थरे कोन करा कि गोटे वीक कांस्टेंटली मंडे रु तुमे सैटरडे जाए क्लास 9टा बेले देख तो तमे जानी परिबो एस मोटिवेशन स्ट्रेटजी ड्रिल मेथड माने तुमको प्रैक्टिस करी करी घोषा घोषा अभ्यास रत करी कि मने रखेबा नेक्स्ट गला कोन 36 ए टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन फ्रीली इन द क्लास दिस इंडिकेट्स व्हाट लूज डिसिप्लिन fear free learning environment ineffective teaching ना टाइम वेस्टेज तो राइट आंसर होची कोन fear free learning environment next 38 7 a teacher use storytelling to teach moral values
से मोराल वैल्यू छुआ मान को पढ़ाइबा नैतिक दक्षता कौन पढ़ाइबा चाहूँगी थ्रो स्टोरी टेलिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोट लर्निंग, लेक्चर मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ड्रिल मेथड। कौन हम 37? ओके बी 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 ओके 37 yes 37 राइट आंसर होची ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्टोरी टेलिंग माध्यम रे आमे जतबे मोरल वैल्यू जानचे सेतबे हमर गोटे एक्सपीरियंस आसी जाउची, हम रियल लाइफ सहित से स्टोरी कनेक्ट रहउची, सो दैट आमे इजीली कनेक्ट करि पड़छे लर्निंग को। देन कौन ए टीचर करेक्ट्स ए स्टूडेंट्स मिस्टेक पॉजिटिवली विदाउट discouraging participation. This shows emotional instability, na positive reinforcement, na indiscipline, na authoritarian attitude. 38 कौन हम? मैम पियाजेट का चारिटा डेवलपमेंट स्टेज टिके कहि दियंतु। ओके द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पियाजेट का चारिटा डेवलपमेंट स्टेज है। फास्ट होची सेंसरी मोटर जोटा कि 0 ରୁ 2 इयर्स। देन आसला कौन ना प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 2 to 7 इयर्स। देन आसला तुमरो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 7 ରୁ 11 इयर्स। देन तुमर आसला कौन ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा तुमर आसुची कौन 11 ऑनवर्ड्स। ओके बुझीगला? सेंसरी मोटर, फ्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एवं फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर रे तुम्हारा ऑब्जेक्ट परमानेंस आसे, फ्री ऑपरेशनल है तुम्हारा इलॉजिकल थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म ए भली कैरेक्टरिस्टिक्स आसे। कंक्रीट ऑपरेशनल गोटे छुआ लॉजिकल थिंकिंग यूज करि थाए एंड से कौन करे ना सेइथरे क्लासिफिकेशन, ट्रांजिटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, नेचुरल थिंकिंग डेवलप हुए एंड फॉर्मल ऑपरेशनल डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ए सब जिनस डेवलप होता है। ओके नेक्स्ट ए टीचर प्रमोट्स वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट थ्रू डेली इंटरैक्शन। दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? हिडन करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम, कोर करिकुलम, एक्टिविटी करिकुलम। कौन हम? 39 39 डी कहीं हम? 39 ए ही हम हिडन करिकुलम एंड किए कहले लास्ट ऑप्शन टा बुझांतु एटार। तो लास्ट ऑप्शन होची अथॉरिटेरियन एटीट्यूड जोटा कि मु स्टार्टिंग रो कहिची एग्रेसिव एटीट्यूड जोटी कि जने टीचर केवल निजे निजर अथॉरिटी प्ले करि थांती। एटा ऑप्शन ए हम पिला माने हिडन करिकुलम हम जेतेबेले आमे गोटे क्लास करिबा मु सब करिकुलम विषय कहबी। नेक्स्ट क्लास रे तुमको डिटेल्स भाव में जिनसटा बुझेबी। एक्टिविटी करिकुलम केमिति होबो? ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट, डेली इंटरैक्शन। तुम इतरे कोनटा एक्टिविटी करूछो? डेली इंटरैक्शन ने जोटा करूछो सेटा हिडन करिकुलम। फॉर्मल करिकुलम माने जोटा तुमरा सिलेबस रे मेंटेन थाए। कोर करिकुलम तमरा किछि सब्जेक्ट स्पेसिफिक करिकुलम थाए। देन एक्टिविटी करिकुलम तमे जो एक्टिविटी मेथड रे करूछो बट ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, लव जो जिनस गुडाक से जिनस गुडाक कम्स अंडर योर हिडन करिकुलम। ओके नेक्स्ट a teacher encourages students to reflect on their own learning. This indicates what? Teacher control learning, metacognitive approach, rote learning ना mechanical learning। कौन हम पिला माने? यस डेली 9 क्लास होउची बट डिफरेंट टीचर का सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, मैथ हो, बटनी हो, हिस्ट्री हो, एमिति भाव क्लास होची। यस राइट आंसर होची मेटा कॉग्निटिव अप्रोच, निजर थिंकिंग ऊपर आहुरी थिंकिंग करिवे। ओके नेक्स्ट 31 द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफी इज impart bookish knowledge, na develop the whole personality of the child, na prepare students only for examination, na preserve traditional culture only।
तो मॉडर्न एजुकेशन अनुसार मॉडर्न फिलोसफी अनुसार एजुकेशन प्राइमरी गोलटा कौन? Yes, right answer होची ऑप्शन बी, दैट इज डेवलप द होल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। आम छुआटीर संपूर्ण रूप से होल पर्सनालिटी डेवलप करिमा, जो थे कि आमर तीनटा डोमेन आसुची। कौ डोमेन ना? फर्स्ट होची कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द चाइल्ड, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द चाइल्ड। सेकंड होची कौन? अफेक्टिव डोमेन ऑफ द चाइल्ड, अफेक्टिव डोमेन, cognitive domain, affective domain, then third one is psychomotor domain। तो यही तीनटा जाक एरिया रे छुआर ऑलराउंड डेवलपमेंट करबा पई होल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड तीनटा को डोमेन डेवलपमेंट पई मॉडर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कहै छी। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। यस बर्षाराणी, हेड, हार्ट एंड हार्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधीजी द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज, गांधीजी को अनुसार गोल ऑफ एजुकेशन कौन? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन ना कैरेक्टर फॉर्मेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क? कौन हम? अकॉर्डिंग टू गांधीजी द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज, yes, option D is the correct answer, that is character formation through productive work। जो थिरे से कही थिले गोटे छुआ प्रोडक्टिव वर्क मध्ये कैरेक्टर फॉर्मेशन करि परिबो, ताको प्रोडक्टिव वर्क बेस्ड क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन दरकार, सो दैट से तार डेली लाइफ रो ब्रेड एंड बटर किणीबार सक्षमता ता पाखरे जेमती थिबो। नेक्स्ट, the goal of education that focuses on development of reasoning, memory and imagination is कौन? फिजिकल गोल, इमोशनल गोल, इंटेलेक्चुअल गोल, सोशियोलॉजिकल गोल? द गोल ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग, मेमोरीज एंड इमेजिनेशन इज कौन हम? 43। यस, वेरी गुड। तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी, दैट इज इंटेलेक्चुअल गोल। तो ये फिजिकल गोल होते तुम कौन होता? हेल्थ विषय जहाँ आसी था। इमोशनल गोल होते लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट, वैल्यूज। तो एगुड़ाक तुम कौन आसता ना? इमोशनल गोल रे। सोशल गोल रे आमर आसता कौन ना? कोऑपरेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो ये सब जिनस गुड़ाक आमर कौन आसता ना? सोशल गोल ऑफ एजुकेशन आसता। इंटेलेक्चुअल गोल रे तुम रीजनिंग, मेमोरीज एंड इमोशन। फिजिकल गोल रे तुम हेल्थ रिलेटेड जहाँ भी। इमोशनल गोल रे लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट, वैल्यूज, ये सब जिनस आसता। तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी, इंटेलेक्चुअल। ओके, नेक्स्ट 44, adjustment with environment and society is the objective of cultural goal, social goal, moral goal ना spiritual goal? सोसाइटी बा एनवायरनमेंट सहित एडजस्ट करबा को गोल अटे? यस, राइट आंसर होची सोशल गोल। नेक्स्ट जीवन तो पिला माने आज क्वेश्चन आंसर सेशन तुमरा एठी ही सरी छी। आ गोटे इनफॉरमेशन जो माने तुमे माने बीएड एग्जाम पई प्रिपेयर होछ, लाइक तुमरा सीयूईटी बीएड हो कि इग्नो बीएड हो, उत्कल बीएड हो कि तुमरा स्टेट गवर्नमेंट रो जो बीएड होची हो, तो तापाई आमर ऑलरेडी तो द्रोण 7.0 बैचेस चली जो माने अच्छंती बहुत भल कथा। एंड जो माने एडमिशन नहीं पारि नथिले बट इंटरेस्टेड साइंस बैकग्राउंड होंदो कि आर्ट्स बैकग्राउंड, आपण माने इंटरेस्टेड कि बैच परचेस करबा पई आम सहित पेड बैच रे जॉइन होबा पई, जोटा स्टार्ट होछि 29 जनवरी 2026 रु पिला माने। तो तुम्हें माने निहाती भाव में आडा 247 आप रे जॉइन हे गया, तमे माने जॉइन हे परिबो पेड बैच रे। एंड कोड मध्ये यूज कर परिबो, दैट इज YT46 और अदरवाइज अदर टीचर मध्ये अछंती जहा कोड भी यूज करि परिबो। जदि तुमे
किसी ना आमर तो यूट्यूब सेशन सब बेले चलो एमती ता सहित जो मैंने कनसेप्चुअल क्लैरिटी विथ पेड बैच रे जॉइन होगा को चाहूच डिटेल्स रे पढ़िया पई तुम मैंने जॉइन हो पार एंड येस सॉरी फॉर द क्लास कहीं क्लास रे मु जानी मु टिके वीक थी बिकॉज ऑफ माय हेल्थ कंडीशन पिला माने मो हेल्थ कंडीशन पाई बहुत वीक थी सो दैट मो वॉइस क्लैरिटी मो जोश मुझे टिके स्लो पढ़ाऊली कहीं मत ब्रीदिंग करने भी प्रोब्लेम होची सॉरी फॉर दैट नेक्स्ट क्लास रो निहाती होपफुली मु भल हो जाइथिबी एमती हब नाही तो एंड येस आउ के जने पचारुले को बुकटा बीएड पाई भल हब ओके तो को बुकटा बीएड पाई भल हब मु सेइथिरे पिला माने कहि परबी तमे बीएड पाई को बुक भल हब जो क्वेश्चंस बहुत सारा अच्छी तुम फॉलो करि परबो को भी क्वेश्चंस तमे चाहिले तमे आडार बुक आमर आडारे साइंस एवं आर्ट्स बोथ रो दिया होची आडा तरफ रो बोथ साइंस एंड आर्ट्स रो भी बुक अच्छी तमे परचेज करि परबो बट जदि तुम केबे कहबी आडारे बुक अच्छी परचेज कर तुम कहबो कि पब्लिसिटी कला मु सेमिति कहूनी तुमको जोठु भल लागुची ओके तो तुमको जोठु भल लगुच तुमको टिप डबल भल लगुच तुमको सौरभ भल लगुच मत आई केयर भल लगे मत कौन भल लगे तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन पाई तुम्हें को भी टेस्ट पर फॉलो कर पार किंतु तुम्हें से टेस्ट पर गला पूर्व फास्ट देख कि कंटेंट क्लैरिटी कौन बेटर अच्छी कि तुम किसी भी तो कंटेंट बुझी पार ना क्वेश्चन तो तुम जोटिकी भी जाओ से भल से चारिआडे आजिकल क्वेश्चन मिलूँ किंतु तुम कौटी कंटेंट बुझी पार कौटी बेटर वे कर ओके तो तमे जो भी बुक फॉलो कर गोटे रेफरेंस हिसाब से तुम बुक रही पार आडा तरफ तुम साइंस आर्ट्स रो अच्छी जोटा कि तुमको 324 समथिंग रे बुक मिल जाऊँ साइंस आर्ट्स रो तो 350 भितर तुम टेस्ट पर हो जाऊँगी जो कि तुमको 2100-2200 क्वेश्चन मिल जाऊँगी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी तुम्हें पूरा 2000 प्लस क्वेश्चन पाइपर ता सहित कंटेंट जहाँ भी तुम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एवरीथिंग कंटेंट से मेंशन अच्छी तो जो मैंने इंटरेस्टेड जल्दी जल्दी द्रोण 8.0 फाउंडेशन बैच रे निजको एनरोल कर नियो आम ऑफलाइन ने आमर ऑफलाइन मीन्स आमर पेड बैच रे आमर क्लास स्टार्ट करदबा एंड डोंट वरी आमर जमती यूट्यूब रे क्लासेस चलची तुम मान एग्जाम पर्यंत द्रोण सीरीज आम मैंने समस्ते तुम सहित अच्छु से जाए निहाती तुम द्रोण सीरीज चलो आम देखा हवा तो लास्ट 9 AM रे देखा हवा शनिवार दिन पुणी टीचिंग एप्टीट्यूड ना एजुकेशनल अवेयरनेस क्लास रे थैंक यू एवरीवन क्लास को एठी एंड करवा देखा नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट सैटरडे ठीक अच्छे मो टेलीग्राम ग्रुप रे समस्ते जॉइन हो जावा आडा 247 ओडिया मु सेहिथरे तुमरा सिलेबस एंड तुमरा मटेरियल आज क्लास रो निहाती भाबरे सेंड कर देबी ओके टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्लास तुमरा सुशांत सर नौछंदी सी ही नेबे तथापि मु बुझी की जणेबी केबेठु हवा कोन हवा ओके थैंक यू।